बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you all? Hope you people are enjoying good health. I'm also very well. Today is Wednesday, 3rd of March 2021. Our final term exams are very near, and we are going to revise our few topics today. We will do the revision of adverb, describing verb, example. इनके एंड पर आता है ये more describing verbs होते हैं और इनके एंड पर आता है ly ज़्यादातर. He ate the cake happily. प्रपोजिशंस उन छोटे छोटे वर्ड्स को कहते हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हमारी मदद करते हैं, जैसे अंडर, नियर, ऑन, इन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, टू और अक्रॉस. और जैसे आई एम हाइडिंग अंडर द टेबल. द बॉयज़ होम इज़ नियर द शॉप. द पेन इज़ ऑन द टेबल. द book is in the drawer. I am hiding behind a tree. She is standing in front of the class. Across, we are going across the tree. Okay, after that we are going to revise our adverbs. Adverb usually verb को more meaningful बना देते हैं. She done the homework very beautifully. I am standing here happily. इसी तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस. अब आपने बहुत गौर से प्रपोजिशंस और एडवर्ब्स को देख लेना है और उसके बाद आपने इनकी खूब सी प्रिपरेशन करनी है और अच्छा सा पेपर करना है. टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़.